Let's continue our topic. What is an ion? If you have understood what I have made you understand in the previous one, then here it will be easy to read and understand. Compounds composed of metals and non-metals contain charged species. चार्ज स्पीसीज ओके NaCl अगर मैंने लिया जो वॉट एग्जाम्पल आई हैव एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस वीडियो Na वॉज प्लस एंड Cl वॉज माइनस सो दैट मीन्स ए चार्ज क्योंकि प्लस माइनस आर कॉल्ड द चार्जेस द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन्स Na alone if I write it won't be called as ion, it will be element. Cl if I write it will be element, but if I write Na plus, if I write Cl minus, if I write O minus 2, they all will be called as ions. Ions may consist of a single charged atoms or a group of atoms that have a net charge on them. It is not necessary only one will be there. It can be CO and CO3 minus 2 also, PO4 minus 2 also. So combine also. Two elements also can make the charge. A group of atoms that have a net charge on them. An ion can be negatively or positively charged. A negatively charged ion is called anion. Please read it properly. Okay, it is anion. Anion nahi hai. A negatively charged ion is called anion, and the positively charged ion is called cation. Don't read it cation. It is cation. Cation. Okay. Take for example sodium chloride. I have explained this example. Its constituent particles are positively charged solution sodium ions Na plus and negatively charged which chlorine ion. Okay, chlorine ion Cl minus. A group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion. जैसे polyatomic था okay, कौन सा poly molecule was there, diatomic, triatomic, tetraatomic, polyatomic. So polyatomic which one what was sulfur. Okay, we shall learn more about the formation in chapter 4. chapter 3 में chapter 4 में ज़्यादा पढ़ेंगे. Now here some basic compounds, very simple basic compounds. Calcium oxide CaO, you can write down. Constituting elements are carbon and oxygen. Ratio by mass 5:2. The same how I have explained for water. Magnesium sulfide, magnesium and sulfur 3:4. Sodium chloride, sodium and chlorine, and 23:35.5. Okay. Writing chemical formulae. What is this formulae? That means it is a plural of formula. Formulas नहीं लिखते हैं, ठीक है. Plural of formula is formulae. Now they are explaining how we are getting the simple chemical formulae. The chemical formula of a compound is a symbolic. This is a definition, underline. Symbolic representation of the composition, of its composition. The chemical formulae of different compounds can be written easily. For this exercise we need to learn the symbols and combining capacity of the elements. Combining capacity, the ions. ठीक है, अभी मैं टेबल बताती हूँ आपको. So those who have +1 will be joining with the -1, and if they want to, then they want one more element. I'll tell you. Okay, symbols and combine. That is why I have given you symbols first earlier. The combining power or capacity of an element is known as its valency. What we have seen in Na plus, so +1 was the valency of sodium, Cl minus, -1 was the valency of chlorine. So when they ask what is the valency of sodium, it will be +1. Don't write Na +1. Okay, if they are asking what is the valency of sodium, you should write only +1. Okay. If they ask what is the valency of chlorine, you should write only -1. Okay, and how are they -1 and +1? I told you. For them, they want to become stable. So they lose the electron or they gain the electron. So losing and gaining will give you the valency. And always the electron which is present in the outermost orbit only, it will be loosed or it will be gained. They will only the electrons which are present in the outermost orbit, they only will do this work. बाकी सब बैठे रहेंगे, ठीक है. The combining power or capacity of an element is known as its valency. For example, okay, let me write something. Cl minus. Okay, so what is the valency of chlorine? It will be -1. Okay, good color I will show you afterwards.
Okay. So let us read, then I'll explain you in the page. Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of the another element to form a chemical compound. The valency of the atoms of an element can be thought of as hands और आर्म्स ऑफ दैट एटम. उसको अगर चाहिए तो वो कितने हाथ देगा, एक हाथ देगा, दो हाथ, तो वहाँ से कितने आएंगे, एक हाथ दो हाथ आएंगे, तो वो कंबाइन हो जाएंगे एंड इट विल बी compound. Okay, chemical formula. Human beings have 2 arms and an octopus has 8. If one octopus has to catch hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of the humans are locked, how many humans do you think the octopus can hold? Okay, represent the octopus with O and humans with H. Can you write a formula for this combination? Did you get OH4 as a formula? Yeah. ओके हमारे पास 2 है और ऑक्टोपस के पास 8 है, तो उनको सभी 8 में ह्यूमन बींग पकड़ने हैं. तो कितने ह्यूमन बींग्स आएंगे? 4 ह्यूमन बींग्स. वाई? बिकॉज हमको 2 हाथ है, उनको 8 है, तो 4 ह्यूमन बींग्स हर एक हाथ को पकड़ेंगे तो सेट हो जाएगा. तो व्हाट फार्मूला आई विल बी गेटिंग? OH4. बट ये तो कोई फार्मूला नहीं, एग्जाम्पल समझाया है. ठीक है. द सबस्क्रिप्ट 4, सबस्क्रिप्ट मतलब जो नीचे लिखा होता है छोटा सा, ठीक है, ये जो छोटा सा है, indicates the number of humans held by the octopus. The valencies of some common ions are given in table 3.6. We'll learn more about in the next chapter. Okay, now I tell you the periodic table. That will be better to more understand. Yeah, this is periodic table. Okay, this you will learn in the next chapter, chapter 4. This is the modern periodic table of the elements. Okay, 114 are there. So scientists have arranged these all elements in such a way so their property of the groups will become same. Groups means vertical. जैसे कि उसको कैसे लर्न करते हैं, ठीक है, अच्छा वाला लर्न करा दूँ आपको पहले. फॉर एग्जाम्पल आई गो फॉर द ग्रुप्स आर नॉट क्लियर बट आई टेल यू 18 ग्रुप्स आर देयर. ऐसे लर्न करना है. ओके, मैं लेट मी टेल यू विद द okay, now I tell you about the Linaceae. Okay, if I go for it, Linaceae, Rubidium, Caesium, Francium. Okay, so okay, the first group. Okay, this part, this we say group 1, group 2, 3, 4, 5, 6, this way coming, and this way we will go in the last. It will be 18th group. This part will be 18th, then no, that will be 17. Okay, let me show you clearly. Yeah, this one you are able to see, that is 18th group. Okay, 18th group ऐसा होता है कि जो completely filled है. Okay, जैसे कि helium if I take, what is the number of helium? 2. Okay, then it is completely filled. Now neon, what is the number of neon? 10. What is the configuration? 2H. Okay, so it is completely filled. So 18th group are completely filled and they are called inert gases. How to remember? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. ऐसे लर्न करना है, ठीक है. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. बार बार बोलते जाना. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. दिस वे. 17th ग्रुप. नाउ 17th ग्रुप इज ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन. उसके एंड में ईन आएगा. ओके, वॉट एवर ग्रुप्स. तो ये इस तरह से कितने ग्रुप है? वर्टिकल्स में 18 ग्रुप्स आते हैं. If I go for 18th group, no valency. Why no valency? Because it doesn't need any electron to lose or to gain. So its valency is 0.
नाउ आई गो फॉर द 17th ग्रुप. 17th ग्रुप आपका ना ग्रुप के हिसाब से याद रहेगा कि 7 है, 17th ग्रुप है तो उसके इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 7. ओके, ध्यान से सुनना वरना नहीं समझ आएगा. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट? 7. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट विल रिक्वायर टू बिकेम एन ऑक्टेट कन्फिग्रेशन? 1. So what will be the valency of these 17 group elements? -1. Okay, then so fluorine, how to remember? FClBrI80. ऐसे लर्न करो तो भी ठीक. FClBrI80, FClBrI80. More and more you speak, you will remember. In this table, no need to remember full. How much I am telling, that much you remember. That it is enough for our 9th standard. Okay. So 17th group element is FClBrI80. Astatine we are not using that much. Iodine, at least you know iodine, you know bromine. Okay, so how to remember? Name wise: fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Okay, more and more you repeat, you will be remember that the elements of 17 groups are these. And the valency of that element is -1. Why? Because 1 electron they gain. Okay, they take 1 electron and became octet configuration and they form आइड क्लोराइड. अगर वो उसका नाम चेंज हो जाएगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, व्हेन दे बिकम -1. क्लियर? नाउ आई गो फॉर द 16th ग्रुप. अभी 16th ग्रुप है ना, तो उसका एलिमेंट व्हाट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन द लास्ट ऑर्बिट? 6. And how much electron they need to complete the octet? 2. So +2. +2? No, it is -2. बिकॉज जो भी ले रहे हैं ना उनको माइनस मिल रहा है. ठीक है, जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उसका वैलेंसी माइनस आएगा. सो ओनली आई टोल्ड मेटल, these all are non metals. Okay, these all are non metals. So non metals are having negative valency, means माइनस होगा, फिर -1 on based on the element, -2 जो भी. सो हियर हाउ मच वी नो, दैट मच ओनली वी डू. ऑक्सीजन, सल्फर आई नो, सेलुरियम, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इतना हमारे काम का नहीं है अभी. ओके, सो हाउ मच वी नो? oxygen and sulfur. So oxygen and sulfur will be having how many, what is the valency of oxygen? -2. Why? Because 2 6 arrangement will be 2 6. So how many electrons are there in the last orbit? 6. How many electrons it will take to complete the octet? 2. And how many electrons? That is why we get, एक तो पहले लिया तो क्या होगा? माइनस. कितना लिया? तो 2. तो what is the valency of oxygen? -2. सिमिलरली व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ सल्फर? सो उसके नीचे जितने भी है सभी का वैलेंसी -2 है. देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, नीचे जितने भी एलिमेंट है दैट वैलेंसी विल बी 0. FClBrI, दो द एटॉमिक नंबर्स आर इंक्रीजिंग बट all will be having the same number of electrons in the outermost orbit, and so all the elements will be having same valency. And that is why I told you, I will tell you in the periodic table, if you understand this table then easy to write the valency. Okay, we are not going for the big numbers, only how much is there in your textbook I am doing. FClBrI, at least you should know, I minus Br minus Cl minus F minus. Why I am telling minus and it is not -1? -1 भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है. -1 you can write. Now I come to 16. Oxygen and sulfur I know, so only this much I will tell you to remember. Oxygen, what is the valency of oxygen? So you will be writing -2. And iron, if I say, it will be O-2. Okay, उसका raise 2 नीचे मत लिखना, ऊपर लिखना. S also -2. Why? Because what is the number of sulfur? 16. So what will be the electron configuration? 2 8 6. तो वापस 6 आया तो 2 चाहिए तो चाहिए मिले, मतलब -2. क्लियर? नाउ आई कम फॉर N. Phosphorus is different. Phosphorus I will tell you later on why P4, based on the element which it combines, उसके ऊपर उसकी वैलेंसी रहती है. Nitrogen also based on the compound. Okay, otherwise it is in the 15th group. In the last orbit, how many electrons will be there? 5. So it will take 3 electrons. Then it will be -3. But sometimes which element nitrogen is making compound with which element, it differs. Okay, carbon, how many electrons are there in the outermost orbit? 4. ठीक है, तो 4 क्या करेंगे?
4 4 मतलब 8 बनाना है तो चारों तो जाने नहीं देंगे, चारों तो लेंगे नहीं. एंड सो कार्बन इज़ वेरी डिफरेंट एलिमेंट एंड इट इज़ वर्सेटाइल. So carbon will neither take or nor gain nor lose the electron. What carbon will do? Carbon share. और वो शेयरिंग ऑफ कार्बन का पढ़ाई आएगा आपको 10th में. ठीक है. सो दिस वे नाउ आई कम फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप. जहाँ पे क्रॉस दिख रहा है वहाँ पे है हाइड्रोजन. ठीक है. हाइड्रोजन इज़ नॉट, आई हैव एक्सप्लेन यू वाई हाइड्रोजन इज़ नॉट गिविंग एंड टेकिंग, बिकॉज उसके पास एक ही है. ओके एक छोड़ देगा तो वो 0 हो जाएगा. But sometimes it has. So we are writing hydrogen valency as 1. Okay, 1. Lithium. First group, yellow color दिख रहा है, that is a first group. Group 1. And they all are metal. So group 1 will be having how many electrons in its outermost orbit? 1. Group 2, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Okay, group 2. That is having how many electrons in the outermost orbit? 2. तो वो 1 2 3 आई टोल्ड यू 1 2 3 होगा इलेक्ट्रॉन. देन दीज एलिमेंट्स विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स, वो छोड़ देंगे. और 5 6 7 है उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन. ओके. सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल विल बी हैविंग प्लस वैलेंसी एंड राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विल बी हैविंग माइनस वैलेंसी एक्सेप्ट द 18th ग्रुप. ओके. सो हियर इफ आई गो फॉर द ली ना के रुबिडियम सीसियम फ्रेंसियम, तो हमको रुबिडियम सीसियम फ्रेंसियम यू शुड नॉट बॉदर अबाउट इट, यू हैव टू बॉदर अबाउट ली ना के. हाउ टू रिमेंबर इट इज ली ना के, जैसे किसी का नाम है. सो इफ़ आई गो फॉर द वैलेंसी ऑफ लिथियम इट विल बी +1, वैलेंसी ऑफ सोडियम इट विल बी +1, के +1. यू कैन राइट Li प्लस Na प्लस K प्लस. नाउ आई गो फॉर द सेकेंड ग्रुप. ओके. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट इट, बट यू शुड नो द हाउ टू बाई हार्ट. बेरिलियम इतना बाई हार्ट करना है, फर्स्ट 2 ग्रुप एंड 16 17 18 ग्रुप बाई हार्ट करना है. ठीक है. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. बेरिलियम ग्रुप 2, so valency will be +2, Mg +2, Ca +2. So this way you have to remember the elements comes in which group and they are metals, it will be plus, and how many which group it will be +1 +2 accordingly. Clear. and अब देखो कंपाउंड कैसे बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई गो फॉर Na, ईजी. ओके. Na इज़ +1, सो वो ढूंढेगा जिसको -1 है. -1 तो बहुत सारे हैं, FCl Bri At. ठीक है. इसीलिए हम Cl के साथ उसको ज्वाइन करते हैं. NaF भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, NaBr भी हो सकता है, NaI भी हो सकता है. एंड दैट इज़ वाई वी डोंट राइट NaCl2, बिकॉज वेन एवर यू फॉर्म अ कंपाउंड देयर वैलेंसी शुड बी 0. For example, NaCl, Na plus and Cl minus, so +1 -1 becomes 0. वो आपको कंपेयर करके, वो सॉल्व करके तब भी एलिमेंट, तब भी केमिकल फार्मूला करेक्ट होगा. इफ़ यू आर राइटिंग NaCl2 दैट विल बी रॉन्ग. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वाई. ओके. सो दिस इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन द आयंस. आयंस बेस्ड ऑन द वैलेंसी. उसकी वैलेंसी क्या है, अगर +2 है तो वो किसके साथ करना चाहेगी. हाँ, फॉर एग्जाम्पल Mg कितना है, +2. okay, this I explain you. Okay, if you have understood then I remove this. I will explain you the how to make the electric chemical formula in the page. I will tell you. Okay, chemical formula I'll explain you in the next class. I'll continue.